and welcome, my dear friends. Today the topic is about IUPAC nomenclature of alkenes and alkynes. In previous video we did talk of IUPAC nomenclature in case of alkanes. Now all the rules which we have talked about in the previous videos shall remain same. Since alkenes and alkynes are functional groups, they are the functionalities, so certain points you must remember before naming these compounds. Point number one is longest chain which you select. Longest chain must contain multiple bonds, means double or triple bond. So the longest chain you select that must contain your double or triple bond mean is the functional group. Second point is you will number the chain. So numbering is done in a way that double or triple bond gets the lowest number. चाहे आपका डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, whatever, they must get a lowest number. So बाकी जो रूल्स है वो वही के वही रहेंगे. मतलब ये कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद में जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड ऑफ का नंबर कम आएगा, then you have to name it prefixes, then there is word root, then there is primary suffix, then there is secondary suffix if there is functional group. So all those rules shall remain same. These are the 2 points which you must remember in this case. And the links for those previous videos have been placed in the description. You can watch them also. So let's talk about certain examples. So we have a first example over here, that is this. I am showing a molecule in terms of bond line representation. I hope you understand it. So double bond is here, so numbering you can do from left to right or from right to left, but here the numbering is from right to left because the double bond get is the number 1, lowest number, 1, 2 and 3. So there is no substituent attached to the chain, so there is no prefix at all. We will directly write the word root, that is prop. Then there is primary suffix. Primary suffix can be either an, in, ein. Since there is unsaturation, that too double bond means alkene type, so you have the primary suffix as in, and the position number of that in is 1, so you have 1 in. And I told you in previous video that word and number के दरमियान आपको हाइफन डालना है, और अगर numbers होंगे तब उनके दरमियान आपको कॉमा डालना है. IUPAC names are actually the single word names. Next example हम लेंगे. This is another example. So here is you have double bond. So numbering starts from here to get the lowest number, that is 1, 2 and then 3. So now there is one substituent over here, that is methyl group. So we have a prefix. The prefix will be methyl. So what is the position number of that methyl? That is 2. So we have 2 methyl. Prop means word root is prop because there are 3 carbons in the longest chain. Then there is 1 ene. 2 methyl prop 1 ene is the name of compound. Next example हम लेंगे. We'll take one more example, that is आप देखेंगे डबल बॉन्ड यहाँ पे है. So you have 1, 2, 3, 4 carbons in this chain. 1, 2, 3, 4, 5 carbons in this chain. So you can now choose this kind of longest chain. So you can choose this longest chain, that is here. This will be the longest chain because it contains how many carbons? 5. 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ से 4 ही आते थे, 1, 2, 3 and 4. So we have 5 carbons in this chain. Now numbering you can do from this carbon to this carbon or from this carbon to this carbon. You must get what's called to be the lowest number for double bond. So अगर आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1, 2,
3 नंबर आएगा डबल बॉन्ड को. अगर यहां से नंबरिंग करेंगे 1 और 2 2 नंबर आएगा डबल बॉन्ड. मीन्स लोवेस्ट नंबर यू गेट फ्रॉम दिस साइड. सो यू कैन नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड 1, then there is 2, then there is 3, then there is 4, and then there is 5. So there are two substituents attached. One is here methyl group, another is here methyl group. Both are methyls, and one is having a Puschel number of 2, another is having a Puschel number of 3. So you have to prefix them. So we have 2, 3 dimethyl. 2, 3 dimethyl. Word root is pent, so we have pent, and ene is on 2 number, so that we have 2-ene. This is the name of this compound. I hope you understand it. One more example we should write over here is this is the example. So now you can select the longest chain. That's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbons on the straight chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbons in this chain also. 1, 2, 3, 4, 5. So you can change. You can use either this chain or the straight chain. Both contain 7 carbons. So let's use the straight chain. That is this chain. Straight chain we choose. Now we have to number this chain. We have to number this chain. If you see, अगर आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 and 2 get is the double bond gets second number. अगर आप यहाँ से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 get is the double bond. So it means we can do the numbering from right to left to get the lowest number for double bond. So we have 1, we have 2, then we have 3, 4, 5, 6 and 7. So there are 7 carbons in the main chain. There are 3 substituents attached. One is here methyl group, second is here methyl group, and third is here ethyl. This is 1 carbon, this is 1 carbon, and you have 2 carbons over here. So you can now use alphabetical order of naming. 5 पे ethyl आता है. Ethyl comes first, E comes first, then M. So you can use 5 ethyl. 5 ethyl. Then there is 3, 4. 3, 4 dimethyl. I told you earlier that the prefixes di, tri are not considered in alphabetical order. It is the M and it is the E. So 5 ethyl, 3, 4 dimethyl. Prefix is finished. Now we have word root. How many carbons in the longest chain? 7. So you have the word root hept. Now you have ene at position number 2. So we have 2-ene. This is how you name an organic compound when it contains unsaturation, that to double bond. Now we should be writing one important point over here. The point is, if there are 2 double bonds, if there are 2 double bonds or triple bonds, अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल्स नहीं डाली है ट्रिपल बॉन्ड वाली कंपाउंड्स की. विल बी टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल्स फ्रॉम शॉर्ट वाइल ऑफ ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम्स. सो इफ देयर आर 2 double bonds or triple bonds, then use prefixes di, tri for 3, etc. Moreover, one important thing is and add a. You have to add a after word root. After word root. Word root के बाद में आपको a ऐड करना है. सपोज आपका ब्यूट है तो ये बनेगा ब्यूटा. अगर आपका पेंट आता है तो आपका बनेगा पेंटा. अगर डबल बॉन्ड 2 होंगे या ट्रिपल बॉन्ड 2 होंगे. ये इंपॉर्टेंट है. लेट्स हैव सम एग्जांपल्स. So first example is this. So you have 2 double bonds in this system. So you can numbering from this side because this double bond gets lowest number. 1, 2, 3, 4 and 5. There is no substituent attached to it at all. So there is no prefix. It directly goes to word root. Word root is 5. So we have pent. Since there are 2 double bonds, I told you when there are 2 double bonds or triple bonds, you have to use diene
diene, but the point is you also have to add a after word root. So word root is pent, so add a, that's penta. Then 1 पे double bond है, 3 पे double bond है, so it becomes 1,3 diene. So the name is penta 1,3 diene. Penta 1,3 diene. Another example we will choose over here is you have the double bond over here, methyl group, then there is methyl group, again a double bond over here, then there is an ethyl group over here. So you have the chain from this side to this side. You can select the longest chain and number it. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 and 8. So we have this longest chain of 8 carbon atoms. You have certain substituent, the substituent is methyl, substituent is methyl and substituent is ethyl over here. So 6 पे ethyl है, which means alphabetical order जाएगा, तो 6 ethyl. So we have here 6 ethyl, then 3, 4 dimethyl, 3, 4 dimethyl. Then there you have the word root oct, but there are 2 double bonds in it, so we have octa. I told you add a after word root when there are 2 double bonds or 2 triple bonds. So we have octa, then 2 पे double bond and 4 पे double bond, 2, 4 diene. 6 ethyl, 3, 4 dimethyl, octa 2, 4 diene is the name of this compound. Let's have some examples of triple bond systems first. The same rules apply to triple bond systems also. So we have the first example for triple bond system, that is ट्रिपल बॉन्ड हम ऐसे दिखाते हैं स्ट्रेट चेन में, इस वजह से बिकॉज sp हाइब्रिडाइजेशन होती है इस कार्बन की. सो वी हैव 1 कार्बन ओवर हियर, वी हैव 1 कार्बन ओवर हियर. ये कार्बन अलग है, ये कार्बन अलग है. सो ये जो ट्रिपल बॉन्ड जब ऐसा दिखाया जाएगा, सो इट मींस वी हैव कार्बन ओवर हियर. ठीक, देन दीज आर द 2 सेपरेट कार्बन्स. नाउ वी कैन नंबर इट. अगर हम यहां से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3 एंड 4, triple bond gets 4 number. 1, 2, 3 and triple bond gets 4 number. So you have the choice, you can do the numbering from either side. So we have 1, 2, 3, then 4, then 5, then 6, then 7 and then 8. There is no prefix at all. Why? Because there is no substituent attached to the main chain. So you have directly the word root. Word root is oct. Since there is only 1 triple bond, so octa नहीं आएगा. octa तब आता है या a तब ऐड होता है जब 2 डबल बॉन्ड्स होंगे या 2 ट्रिपल बॉन्ड्स होंगी. सो वी हैव oct 4ene. सॉरी, इन नहीं आएगा, आइन आएगा बिकॉज इट्स ट्रिपल बॉन्ड. सो वी हैव आइन 4ine. सो oct 4ine. और वी कैन राइट इट इन अदर वे आल्सो 4-octine. इस तरीके से भी जो है आप लिख सकते हैं इसको, oct 4ine. I hope you understand it. Next example हमारे पास है, we have the next example, that is this. यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, मीन्स ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है. ठीक, and these are the next carbon atoms. Now you have over here this substituent. So we can do the numbering now. अगर आप यहां से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4 and 5 get is the number triple bond. अगर यहां से करेंगे 1, 1, 2, 3, 4, 5. तो यहां से भी 5 आता है, यहां से भी 5 आता है. अब मसला ये है कि अगर आप देखेंगे पहले स्ट्रेट चेन में, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कार्बन स्ट्रेट चेन. अगर यहां से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbons. So we will use this as the main chain. We will use this as the main selected longest chain. अब ये जो है, this is the substituent attached over here. This is the substituent attached. अब ट्रिपल बॉन्ड का नंबर क्या आएगा? ट्रिपल बॉन्ड मस्ट गेट द लोवेस्ट नंबर. अगर आप यहां से देखेंगे, if you see from this side, 1, 2, 3, 4 and 5. ट्रिपल बॉन्ड गेट इज द नंबर 5. अगर यहां स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4 and 5, triple bond also get is the number 5 from this side also. So but you don't have the choice over here. Why? Because you cannot numbering from this side
क्यों? यहां से भी 5 आता है, यहां से भी 5 आता है, लेकिन यहां से एडेड एडवांटेज है दैट यू हैव द सबस्टिट्यूएंट गेटिंग द लोवेस्ट नंबर, सो यू कैन नंबर फ्रॉम दिस साइड. सो यहां से जब आप नंबरिंग करेंगे दैट इज द रॉन्ग वे बिकॉज द सबस्टिट्यूएंट विल गेट अ लार्जर नंबर. यहां से अगर स्टार्ट करेंगे तो ये 5 आता ही है यहां से भी, लेकिन सबस्टिट्यूएंट गेट इज द लोवेस्ट नंबर. दिस इज इंपॉर्टेंट. सो वी कैन नंबर इट फ्रॉम दिस साइड. सो इट्स 1, it's 2, it is 3, then 4, then 5, then 6, then 7, 8, 9 and 10. So you have the substituent now getting the lowest number, that is 3. 5 ट्रिपल बॉन्ड को आता है. अगर आप यहां से करते तो 5 यहां पे भी ट्रिपल बॉन्ड का आता, लेकिन यहां से एडवांटेज ये है कि substituent get is the lowest number. So we have here 3-methyl because there is substituent, it used to be prefixed 3-methyl. Word root is dec. There is one triple bond only, so we don't have deca, we have dec. Then you have 5, then you have ine. So we have 3-methyl dec 5-ine. This is the name of this compound. This is the name of this compound. Now let's switch on to those compounds in which we have more double bond as well as triple bond. So we will write the statement over here. If molecule contains both double and triple bonds. अगर मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड भी होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, तब क्या करेंगे? देन नेम इज alkynyl. Alkynyl is the name. So मतलब ये कि अल्क जब आप लिखेंगे तो इन पहले आएगा, उसके बाद आइन आएगा. इन का जो ई था लास्ट में वो ड्रॉप किया गया, यू हैव आइन. सो इन आइन है, इन आइन. सो अल्किनाइन इज द नेम, बट अल्काइनीन मतलब आप लिखते आइन पहले फिर लिखते इन. सो दिस इज नॉट करेक्ट. IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से ये करेक्ट नहीं है. दिस इज द करेक्ट वन. यू हैव टू राइट फर्स्ट इन, देन यू हैव टू राइट आइन. This is the name of this compound. So if a molecule contains double bond as well as triple bond, name will be alkene. Alkene will be the name rather than alkynene. This is not true. One more point you should remember. Once you do numbering, so numbering is done to get lowest number for double and triple bond. डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है दे मस्ट गेट द लोवेस्ट नंबर. वहां से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है. अगर चॉइस होगा, इफ देर इज चॉइस फॉर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, गिव प्रेफरेंस टू डबल बॉन्ड. Give preference to double bond. This is important. So दो चीजें आपको याद रखनी है यहां. एक, नाम क्या है. जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इकट्ठे होंगे तो नाम आएगा अल्किनाइन. दूसरा, नंबरिंग आप वहां से करेंगे जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप जो है उनका नंबर कम आएगा. सो नंबरिंग इज डन टू गेट द लोवेस्ट नंबर फॉर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स. ये तब पॉसिबल है जब चॉइस नहीं है. अब चॉइस होगी, इफ देयर इज अ चॉइस दैट यू गेट द सेम नंबर फॉर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, सो तब आपका जो है यू विल गेट द प्रेफरेंस फॉर डबल बॉन्ड. सो डबल बॉन्ड मस्ट बी गिवन द प्रेफरेंस जब चॉइस होगी. ये चॉइस कैसी है? आई विल गिव यू एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट इट. सो वी हैव नाउ एग्जांपल्स. द फर्स्ट एग्जांपल इज 1 2 3 4, देन देयर इज लाइक दिस. अब देखिए यहां पे डबल बॉन्ड है. इस एग्जांपल में अगर आप देखेंगे ये ट्रिपल बॉन्ड है यहां. दिस इज वन कार्बन, दिस इज द नेक्स्ट कार्बन, फिर ये कार्बन आएगा. सो व्हाई आई एम शोइंग इट स्ट्रेट लाइन? बिकॉज अल्काइन्स जो होते हैं उनका sp हाइब्रिडाइजेशन होती है. दे आर लीनियर स्ट्रक्चर्स, दैट्स व्हाई वी शो इट लाइक दिस. तो ये मॉलिक्यूल है. अब नंबरिंग कहां से करेंगे? आपके पास दो तरीके हैं. एक तो यहां से नंबरिंग करता है यहां से, बट डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड विल गेट द लार्जर नंबर, तो यहां से करेंगे. वी हैव 1, वी हैव 2, देन 3 4 5 6 and 7. There is no substituent attached to it at all, so we have directly the word root. Word root is what? Word root is hept. Then it's, अब बताइए
नाम कैसे देते हैं हम? नाम देते हैं हम एज इनाइन। आप देखिए इट्स इन पहले आएगा, उसके बाद आइन आएगा। सो अल्क के बदले हैप्ट तो आ गया, अब इन आएगा। इन इज 4, 4 इन, देन 1 याइन, इनाइन। सो इन 4 पे है, आइन 1 पे है। सो यू कैन नॉट राइट इट लाइक दिस, हैप्ट 1 याइन 4 इन. This is wrong. I told you inine is not the name, but enine is the name. Enine, alkenine. You see, alkenine instead of alkynine. So alkenine is the name. इन पहले उसके बाद आइन, इन पहले उसके बाद आइन। और इन का जो ई है वो ड्रॉप करना है। सो 4 in 1 याइन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है। सो वी हैव वन मोर एग्जांपल, दैट इज दिस। ये मॉलिक्यूल आपके पास है, आप नंबरिंग करेंगे यहां से। क्यों? बिकॉज दे विल गेट द लोवेस्ट नंबर। सो इट्स 1, इट विल बी 2, बिकॉज ये एक कार्बन होता है, ये दूसरा कार्बन होता है। 1 2, देन दिस इज 3 4। सो इसका नंबर 1 आ गया, इसका नंबर 4 आ गया। अगर यहां से करते तो इसका नंबर पता नहीं क्या आता, 1 2 3 4 5 आता, 6 7 8 आता, तो दैट विल बी लार्जर नंबर। सो दिस इज 5 6 7 8 and 9. This is the selected chain. Now you have the substituents attached to it. One substituent is methyl over here. Next substituent is methyl over here. So methyl is at 6 and 7. So we have 6, 7 dimethyl as the prefix. Then you have the word root 9. That's called non. अब 4 in, पहले in आएगा, उसके बाद 1 आइन आएगा. This is how you name these compounds in which we have double as well as triple bonds. Now we'll use one more example why there is choice. Choice वाले example मैं आपको देता हूं. So we have here ठीक, अब आपका यहां से डबल बॉन्ड है। देखिए here's the choice. How? देखिए ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। 1 कार्बन पे क्या है आपको, अगर आप नंबरिंग करेंगे, मैं बनाऊंगा, आई विल मेक इट ऑन बोथ साइड्स. I'll make this twice. So we have again here. अब देखिए आप, एक तरीका ये है, आप यहां से नंबरिंग करेंगे. So it's 1, it's 2, it is 3 4 5 6 and 7. दूसरा तरीका आप नंबरिंग करेंगे यहां से 1 2 3 4 5 6 and 7. अगर आप यहां देखेंगे, डबल बॉन्ड का नंबर 1 है, ट्रिपल बॉन्ड का नंबर 6 है. So double bond get is the number 1, triple bond get is the number 6. यहां से देखेंगे, triple bond get is the double bond get is the number 6, triple bond get is the number 1 and double bond get is the number 6. So इसका 1, इसका 6, अगर यहां से करेंगे तो इसका 1, इसका 6. अब किसको प्रेफरेंस देंगे? So there is a choice now. There is a choice. So you will use double bond as preference. I told you if there's a choice for double and triple bonds, then give preference to double bond. Give preference to double bond. So preference आपको double bond को ही देनी है. मतलब you must number it from that side where the double bond is closer. So ये numbering जो है correct numbering है. This is not the correct numbering. So you name it like this. So there is no suffix, there is no prefix at all because there is no substituent attached. So you have the 7 carbons, that's hept. ठीक, अब आएगा आपका 1 in, पहले इन ही आता है, उसके बाद 6 आइन. नाम तो वही है इनाइन, बट द पॉइंट इज नंबरिंग के मामले में अगर चॉइस होगी तब आपका प्रेफरेंस देना लाजमन है फॉर द डबल बॉन्ड. दिस इज हाउ यू नेम दीज कंपाउंड्स. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आप लेंगे यहां, लास्ट एग्जाम्पल हम लेंगे यहां. सो वी हैव दिस एग्जाम्पल. So you have here 1 2 3 4 5 and 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. This is the molecule. So you basically number it now. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. This is the longest chain. So you will number it from this because double bond gets the lowest number because of choice. अगर आप देखेंगे यहाँ 1
पे डबल बॉन्ड, 2 3 4 5 6 7 8 पे ट्रिपल बॉन्ड। अगर यहां से करेंगे 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, 2 3 4 5 6 7 8 पे डबल बॉन्ड। So when you have choice, you will get basically the numbering for double bond. So you have 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Now you have two substituents attached over here, 4 and 5. So basically you have these prefixes 4 5 diethyl. So it's 4 comma 5 diethyl. Then what is the word root? None. Then 1 in, then 8 याइन। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस तरीके से जो है आप नाम लिख सकते हैं IUPAC के हिसाब से फॉर दीज alkenes and alkynes. So this was all about alkenes and alkynes. If you like my videos, please do not hesitate to subscribe and share my channel. Comment for more improvement and like करना ना भूलिएगा. Share as much as you can and take good care of yourselves. I'll come up with more videos. Thank you very much.